அனைவருக்கும் எஸ்பி ஸ்லோகாஸின் இனிய வணக்கம். தேவி நாராயணியத்தில் தசகம் 25 முதல் 28 வரையிலான ஸ்லோகங்களை மட்டும் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அதாமரசத்ரு விநாசத்ருப்தாः चिराय भक्त्या भवतीं भजन्तः मन्दीभवद्भक्तिहृदक्रमेण पुनश्च दैत्याभिभवं समीयुः. शुम्भो निशुम्भश्च सहोदरौ स्वैः प्रसादितात् पद्मभवात् तपोभिः स्त्रीमात्रवद्यत्वमवाप्य देवान् जित्वा रणेद्युषतुरैन्द्रलोकम्. भ्रष्टश्रियस्ते तु कुरूपदेशात् दिमाद्रिमाप्तानुनुवुः सुरास्त्वां तेषां पुरश्चाद्रिसुधा विरासीत् स्नातुं गता सा किल देवनद्यां. तद्देहकोशात्वमजा प्रजातां यतः प्रसिद्धा खलु कौशिकीति महासरस्वत्यभिधां दधाना त्वं राजसी शक्तिरितीर्यसे च. हिमाद्रिशृङ्गेषु मनोहराङ्गी सिंहाधिरूढा मृदुगानलोलां श्रोत्राणि नेत्राण्यपि देहभाजां चकर्षिताष्टादशबाहुयुक्तां. विज्ञाय शुम्भः किल दूतवाक्यात् त्वां मोहनाङ्गीं दयितां चिकीर्षुः. त्वदन्तिके प्रेषयति स्म दूतान् एकैकशस्निग्धवचो विलासान्. त्वां प्राप्यते कालिकया समेतां एकैकशस्सुम्भगुणान् प्रभाष्य. पत्नी भवास्येति कृतोपदेशाः तत्प्रातिकुल्यात् कुपिता बभूवुः. शुम्भाज्ञया धूम्रविलोचनाख्यो रणोद्यतः कालिकया हतोऽभूत्. चण्डं च मुण्डं च निहत्य काली त्वत्पालजातद्रुधिरं पपौ च. चामुण्डिकेति प्रथिता ततः सां त्वां रक्तबीजोधयुयुत्सुराप. यद्रक्तबिन्धूद्भवरक्तबीज सङ्घैर्जगद्व्याप्तमभूदशेषम्. ब्रह्मेन्द्रपाश्यादिकदेवशक्ति कोट्योरणं चक्रुररादिसङ्घैः तत्सङ्गरं वर्णयितुं न शक्तः सहस्रजिह्वोऽपि पुनः किमन्ये. रणेदिघोरे विवृताननासां काली स्वजिह्वां खलु चालयन्ती. त्वच्छस्त्रकृत्ता किल रक्तबीज रक्तं पपौ गर्जनभीतदैत्यां. त्वया निशुम्भस्य शिरो निकृत्तं शुम्भस्य तत्कालिकयापि चान्ते. अन्ये सुरास्त्वां शिरसा प्रणम्य पातालमापुस्त्वदनुग्रहेण. हतेषु देवा रिपुषु प्रणम्य त्वां तुष्टुवुः स्वर्गमघुः पुनश्च. ते पूर्ववद्यज्ञः वीर्हरन्तो भूमाववर्षन् जगृषुश्च मर्त्याः. मातर्मदीये हृदि सन्ति दम्भ दर्पाभिमानाद्यसुरा बलिष्ठाः. निहत्य तान् देह्यभयं सुखं च त्वमेव माता मम ते नमोऽस्तु. दशकं 26. राजा पुरासीत् सुरथाभिधानः स्वारोचिषे चैत्रकुलावतंसः. मन्वन्तरे सत्यरतो वदान्यः सम्यक् प्रजापालनमात्रनिष्ठः. वीरोऽपि दैवात् समरे सकोला विध्वंसिभिः शत्रुबलैर्जितः सन्. त्यक्त्वा स्वराज्यं वनमेत्य शान्तं सुमेधसं प्राप मुनिं शरण्यम्. तपोवनं निर्भयमावसन्दृत् छायाश्रितः शीतलवातपृक्तः. स एकदा राजगृहादिचिन्ता पर्याकुलः कञ्चिदपश्यदार्तं.
राजा तमोचे सुरथोऽस्मि नाम्ना जितोरिभिर्भ्रष्टविभूतिजालः गृहादिचिन्तामथितान्तरङ्गः कुतोऽसि कस्त्वं वद मां समस्तम् श्रुत्वेति स प्रत्यवदत्समाधि नामास्मि वैश्यो हृतसर्ववित्तः पत्नीसुदात्यै स्वगृहान्निरस्तः तथापि सोत्कण्ठमिमान् स्मरामि अनेन साकं सुरथो विनीतो मुनिं प्रणम्याह समदीनामां गृहान्निरस्तोऽपि गृहादिचिन्तां करोति सोत्कण्ठमयं महर्षे ब्रह्मैव सत्यं परमद्वितीयं मिथ्या जगत्सर्वमिदं च जाने तथापि मां बाधत एव राज्य गृहादिचिन्ता वदतस्य हेतुम् ऊचे तपस्वी शृणु भूपमायां सर्वस्य हेतुः सगुणा गुणासां बन्धं च मोक्षं च करोति सैव सर्वेऽपि मायावशगा भवन्ति ज्ञानं हरेरस्ति विधेश्च किन्तु क्वचित् कदाचिन्मिलितौ मितस्तौ विमोहितौ कस्त्वमरेणुकस्त्वम् एवं विवादं किल चक्रतु स्म ज्ञानं द्विधैकं त्वपरोक्षमन्यत् परोक्षमप्येतदवेहि राजन् आद्यं महेश्या कृपया विरक्त्या भक्त्या महत्सङ्गमदश्च लभ्यम् य एतदाप्नोति स सर्वमुक्तो द्वेषश्च रागश्च न तस्य भूप ज्ञानं द्वितीयं खलु शास्त्रवाक्य विचारतो बुद्धिमतैव लभ्यम् शमादिहीनो न च शास्त्रवाक्य विचारमात्रेण विमुक्तिमेति देभ्यः कटाक्षैर्लभते च भुक्तिं मुक्तिं च सा केवलभक्तिगम्यां सम्पूज्यतां साकमनेन दुर्गां कृत्वा प्रसन्नां स्वहितं लभस्व श्रुत्वा मुनिर्वाक्यमुभौ महेशी त्वां पूजयामास तुरिद्धभक्त्या वर्षद्वयान्ते भवतीं समीक्ष्य स्वप्ने सतोषावपि तावतृप्तौ दिदृक्षया जाग्रति चापि भक्ता वाचेरतुर्ध्वौ कठिनौ व्रतानि वर्षत्रयान्ते सुमुखीं प्रसन्नां त्वां वीक्ष्य तौ तुष्टुवतु प्रहृष्टौ दैवात् समाधिस्त्वदनुग्रहेण लब्ध्वा परं ज्ञानमवाप मुक्तिं भोगाविरक्तः सुरतस्तु शीघ्रं निष्कण्टकं राज्यमवाप भूयः मन्वन्तरे भूपतिरष्टमे सावर्णिनामा च मनुर्बभूव त्वं भुक्तिकामाय ददासि भोगं मुमुक्षवे संश्रुतिमोचनं च किञ्चिन्न पृच्छामि परं विमूढो नमामि ते पादसरोजयुग्मम् दशकं 27 दैत्यः पुरा कश्चन दुर्गमाख्यः प्रसादितात् पद्मभवात् तपोभिः अवैदिकं वैदिकमप्यगृह्णान् मन्त्रं समस्तं दिविषज्जयैषी वेदे गृहीते दितिजेन विप्राः श्रुतिस्थिरा विस्मृतवेदमन्त्राः सान्ध्यानि कर्माण्यपि नैव चक्रुः क्षितिस्त्ववेदाध्ययना बभूव हृतेषु मन्त्रेष्वखिलेषु पूजां यज्ञादिभूमौ न कृतं मनुष्यैः सुरा अशक्तास्तदला भगिन्नां दैत्येन युद्धे बलिना जिताश्च त्यक्त्वा दिवं ते गिरिहह्वरेषु निलीय वर्षाणि बहूनि निन्युः वृष्टेरभावाद्धरणी च शुष्क जलाशया तर्षनिपीडिताभूत् स
सर्वे तृषार्ताश्च हिमाद्रिमेत्य त्वां ध्यानपूजानुदिभिर्भजन्तः प्रसादयामासुरनेककोटि ब्रह्माण्डकर्त्रीमखिलार्तिहन्त्रीं दृष्टा दयाद्राक्षिशता त्वमेभिः कृपाश्रुवर्षै नवरात्रमुद्यां जलाशयान् पूर्णजलांश्चकर्थ जनाशताक्षीध्यभिधां ददुस्ते क्षुत्पीडितानां च चराचराणां सर्वत्र नानाविधमन्नमिष्टं स्वादूनि मूलानि फलानि चादाहां शाकम्भरीति प्रथिता ततो भूः दैत्यस्तु विज्ञाय समस्तमस्त्र शस्त्रैः सैन्यप्रहरन् वपुस्ते रणाङ्गने सायकविद्धगात्रः सशब्दमुर्व्यां तरुवत्पपात स चासुरात्मा खलु वेदमन्त्रान् चिरं पठन् त्वामभिवीक्षमानः गतायुराविश्य परात्मनि त्वयि इवापमुक्तिं मिषतां सुराणां वेदान् हृतानब्जभवानने त्वं पुनश्च निक्षिप्य जगत्सुरक्षां कृत्वा नुता देवगणैर्नरैश्च तुष्टातिरो भूकरुणार्द्रनेत्रां भक्तस्य वै दुर्गतिनाशिनी त्वं सुखप्रदा दुर्गमहन्त्री मातः दुर्गेति नाम्ना विदिता च लोके विचित्ररूपास्तव देवि लीलाः कोऽप्यस्ति चित्ते मम दुर्गमोऽयं ज्ञातस्त्वया नैव मया तु देवी यः सन्ततं दृह्यति मे तमाशु संहृत्य मां रक्ष नमो नमस्ते. दशकं 28. हालाहलाक्यानसुरान् पुरातु निजग्नतुर्विष्णुहरौ रणान्ते स्वेनैव वीर्येण जयोऽयमेवं तौ मोहितौ दर्भमवापतुश्च ततो विधिस्तौ तरुवद्विचेष्टौ तेजो विहीनावभिवीक्ष्य भीतः निमीलिताक्षः सकलं विचिन्त्य जानन् सुतान् दक्षमुखानुवाच पुत्रा हरिं पश्यत धूर्जटिं च यौनष्टशक्तिः खलु शक्तिकोपात् ततो जगद्भारयुतोऽस्मि यूयं शक्तिं तपोभिः कुरुत प्रसन्नां शक्ते प्रसादेन हि पूर्ववत्तौ स्यातां यशो वृद्धिरनेन वस्यात् शक्तिश्च यत्रावतरत्यमोघम् एतत्कुलं याति कृतार्थतां च शक्ते कटाक्षैर्जगतोऽस्तु भद्रम् एवं निशम्याशु हिमाद्रिमेत्य दक्षादयोद्यानजपादिभिस्त्वाम् आराध्य भक्त्याब्दशतानि निन्युः दृष्टा पुरस्तैस्तु नुता त्वमात बीद्यालमात्या च हितं ददामि गौरी च लक्ष्मीश्च ममैव शक्ति तेषं भवे प्राग्हरये च दत्ते तौ शक्तिसाहाय्यत एव दैत्यात् निजग्नतु सत्यमिदं तु ताभ्यां हा विस्मृतं शक्त्यवमानदोषात् विनष्टशक्ति खलु तावभूतां तौ पूर्ववत् स्वामिह शक्तिरेकां जायेत दक्षस्य कुले मदीयां क्षीराब्धितोऽन्या च पुरारिराध्यां गृह्णातु पश्चादितरां च विष्णुः सर्वे स्वशक्तिं परिपूज्य मायां बीजादिमन्त्रान् विधिवज्जपन्तः विराट्स्वरूपं मम रूपमेतत् सच्चित्स्वरूपं च सदा स्मरेत प्रयाततुष्टा जगतां शुभं स्यात् एवं त्वमाभाष्यतिरो ददाथ कारुण्यतस्ते गिरिशो हरिश्च शक्ति
शक्तावभूतां निजकर्म कर्तुं मातः कटाक्षा मयि ते पतन्तु मास्तु मे शक्त्यवमानपापं सर्वान् स्वधर्मान् करवाण्यभीतो भद्रं मम स्यात् सततं नमस्ते. தேவி நாராயணியத்தில் 25 முதல் 28 வரை உள்ள தசகங்களின் ஸ்லோகங்களை மட்டும் இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.